delegates with great joy and immense gratitude. We stand on the brink of a remarkable journey, one that we will remark upon other, filled with learning, experience, and enlightenment. It is a traditional and symbolic to start such a journey with the lighting of a lamp. Just as the light removed darkness, knowledge removed ignorance, and so, completing this metaphorical illumination, we launch our event. A heartfelt thanks to our esteemed dignitaries for leading this auspicious picnic. As the lamplight continues to radiate throughout the day, let it remind us of our collective commitment to knowledge, harmony, and progress. We are thrilled to witness such enthusiastic participants and a highly learned audience gathered to deepen their understanding on the significant topic. It's my absolute pleasure to extend a hearty welcome to all of you who are witnessing this great event, International Conference 2024. Today's conference on embracing change and transformation in industrial ecosystem aims to bring to light various aspects associated with this topic, thereby sparkling thoughtful discussions and stimulating new ideas. The agenda for today's conference is Embracing Change and Transformation in the Industrial Ecosystem, which refers to adapting and welcoming new technologies, processes, and strategies to stay competitive and relevant in the evolving business landscape. It involves a protective approach to innovation, flexibility, and continuous improvement within industrial sectors to meet the demands of a dynamic and rapidly changing market. As we set out on this intellectual journey, we hope that the conference will offer all attendees a plethora of insights, enable fruitful interactions, and inspire fresh perspectives about the topic at hand. Without further ado, let's begin our journey of knowledge. So before we begin, I would like to brief about the college profile. Dr. Viren Swarup College of Management Studies, set up in 1999, is the premier management institute located in the heart of the industrial city of Kanpur. Endearingly known as CMS, it is the outcome of historic and unparalleled contribution of its founder and legend educationist Sri Raghavendra Swarup Ji. Promoting the vision and mission of Sri Raghavendra Swarup Ji, Dr. Mrs. Mini Swarup Ma'am, Chairperson Board of Management, Dr. Viren Swarup Memorial Trust, Kanpur visualized CMS as an apex center for high-quality standards of professional education, training, and research programs and activities. Leaving benchmark on the path, CMS has been rated
as the prestigious and leading institute for professional education in the areas of management, IT, and communication studies by a business survey and ranking organization. CMS is well known for its unique teaching pedagogy tailored to meet the vital needs of industry and society at large. Our vision is to be truly world-class institution of academic excellence with total commitment and dedication to quality education, research, consultancy services, training, ethics, and human values with a holistic concern for society and environment. Our mission is to nurture, develop, and produce globally competent business leaders with a strong desire to excel as professional and improve quality of human life, society, and environment. With this luminous start, we now officially declare the event open and proceed with our planned schedule. We are fortunate to have with us today some distinguished guests who are noted figures in their respective fields. Each one of them brings valuable expertise and insight that will indeed make our exploration of the conference topic a fruitful and enriching experience. Our first guest of honor is Professor Dr. Shamsher Sir. Professor Dr. Shamsher Sir is holding the post of Vice Chancellor HETU Kanpur since April 2020-2021. He holds a bachelor's degree from HETU Kanpur, MTech and PhD from IIT Delhi and MBA from DTU Delhi. Prior to his present assignment, Shamsher Sir was professor in the Department of Mechanical Engineering, Delhi Technological University. During his tenure in DTU, he has also held several administrative portfolios such as Registrar, Controller of Finance, Dean Student Welfare, Dean Continuing Education, Head of Department of Mechanical Engineering, Proctor, and has been associated with the several other academic and administrative committees. He has also worked as the director in the National Institute of Electronics and Informational Technology, Delhi, and looked after its regional offices in Gorakhpur, Lucknow, Patna, Chandigarh, Ajmer, Shimla, Ropar, and Delhi. He has also worked as professor in NIT Jalandhar, Punjab, Deputy Director in National Power Training Institute NPTI, Faridabad, Haryana, Engineer in NTPC, New Delhi. Professor Dr. Shamsher Sir has more than 100 research papers in national and international journals, conferences of repute to his credit. During his association with NPTI, Shamsher Sir received the Consistency High Performance Award and the Scroll of Honor Award in NPTI. He was also awarded the Best Research Paper Award by the Institution of Engineers, India, Commendable Research Award by DTU. We are extremely grateful to have such a great personality among us. So I would request our Director Ma'am to welcome Professor Dr. Shamsher Sir with a bouquet. Give a huge round of applause. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I feel over delighted to introduce to our next guest of honor, Professor J.P. Pandey, sir, Vice Chancellor of Dr. Abdul Kalam Technical University, AKTU. His energy, optimism, and engaging approach are much appreciated and will definitely add to the event's unforgettable approach. Due to certain constraints, Sir is not present here physically, but he will be soon joining us via online mode. Our another guest is prominent figure Professor Dr. Yogen Kumar Mishra sir. Professor Dr. Yogen sir is the professor MSO at Max Closen Institute, Nanosut, University of Southern Denmark, Denmark. Prior joining to SDU, he worked as a group leader at Kiel University, Germany. He did habilitation in material science from Kiel University in 2015 and PhD in physics in 2008 from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. In Kiel, he introduced a new frame-based process for metal oxide tetrapod
nanostructuring, and their 3D networks, which showered many applications in engineering and biomedical fields. Additionally, tetrapods can be used as a templates to create hybrid and new 3D materials. At NanoSud, he is heading Smart Materials Group with a focus to develop new materials from green and sustainable technologies. He is Humboldtian and recently honored with Fellow of Royal Society of Chemistry. We are honored to have you here, sir. I would request our director ma'am to welcome our guest of honor with a token of fragrance which will keep him fresh throughout the day. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Moving further, I would like to introduce our next guest, who is contributing personality, Mr. Praveen Kumar Dwivedi, sir. Mr. Praveen Kumar Dwivedi, sir, President of Work India Group, is a veteran banker, trainer, and a mentor with experience of over 30 years in the financial services industry across Mumbai, Delhi, Kolkata, Lucknow, and Kanpur. He worked in MNC and private banks at senior levels with his last role as Senior Vice President with HSBC Bank based out of Kolkata. Mr. Praveen Kumar Dwivedi, sir, PGDPM, Narsi Munji Institute of Management Studies, Mumbai, law graduate and postgraduate in economics. He holds a diploma in financial services and CAIIB from the Indian Institute of Bankers. Besides other financial industry certifications, he is a CIEL certified retirement readiness expert and life member of All India Management Association, Delhi since 1997, and is currently Senior Vice President, Lucknow Management Association. He is council member in RFRAC, member of NABARD, of Farm, Regional Committee, and council member, All India Management Association. He is a senior joint secretary, Indian Industrial Association, Lucknow, chapter and chairman expert committee, intellectual property rights, AAII, national body. We are extremely delighted to have your guidance here, sir. I would request Mr. Shweta Saxena ma'am to welcome Mr. Praveen Kumar Dwivedi, sir, with a token of gratitude. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I would like to thank our patrons to make the colloquium a dream come true. So, I would like to extend my heartiest gratitude to our highly respected Dr. Mrs. Mini Swaroop Ma'am, the backbone of our institution. Mini Ma'am is the chairperson of Dr. Viren Swaroop Memorial Trust. Her aim is to develop committed and socially accountable managers who could respond more effectively to the changing expectations of the world. I would also like to thank an eminent personality who hardly needs any introduction, Dr. Alakshen Swaroop Sir, Secretary of Dr. Viren Swaroop Memorial Trust, who is behind maintaining the legacy of the institution. So, you all made us proud of your distinguished work in numerous cities. You are one of the most celebrated personalities among the institution. I would also like to thank another charming personality, Ms. Akansha Swaroop Ma'am. Ma'am is the Joint Secretary of Dr. Viren Swaroop Memorial Trust. She has achieved a great success in her field and has significantly contributed to the community and society. Apart from this, she is a philanthropist and renders selfless service to society. She has molded the lives of the students and served people with her kindness. True teachers use themselves as bridges over which they invite their students to cross them. Having felicitated their crossing joyful collapse, encouraging them to create bridges of their own. Having this great thought, on behalf of the college, we welcome
Respected Dr. Gauri Singh Gaur Ma'am, Director of the College of Management Studies, most renowned institution functioning under her supervision. She is working towards connecting young minds to strive towards success and achievement. We are grateful to her for her glorious presence. She is known for her wonderful administration and high achievements in the institution she is in charge of. So I would request our Director Ma'am, Dr. Gauri Singh Gaur Ma'am, to take the honor to address the gathering with her incredible knowledge. Good morning to all the members present here on the dais. I am privileged to have Professor J.P. Pandey, Honorable Vice Chancellor at AKTUE Lucknow, Professor Dr. Shamsher Sir, Honorable Vice Chancellor from HPTU Kanpur, International key speaker Dr. Yogen Kumar Mishra from University of Southern Denmark, Mr. Praveen Kumar Dwivedi, founder and president, Avok India Group, Dr. Mrs. Mini Swaroop Ma'am, chairperson of Viren Swaroop Memorial Trust, Dr. Alakshen Swaroop Sir, secretary of Viren Swaroop Memorial Trust, Ms. Akansha Swaroop Ma'am, joint secretary Viren Swaroop Memorial Trust as the guest for today. I extend a warm welcome to each one of you at this prestigious international conference on embracing change and transformation in industrial ecosystems. As the distinguished guests, your presence adds immense value to the discussions that will be discussed today. We stand united in our pursuit of knowledge, collaboration, and global progress. We find ourselves at the dawn of a new era, characterized by the emergence of an industrial ecosystem unlike we have seen before. As technical advancements continue to accelerate at an unprecedented pace, industries across the globe are undergoing profound transformations, giving rise to a dynamic and interconnected networks of players, processes, and technologies. At the heart of this emerging industrial ecosystem lies the convergence of digital technologies such as artificial intelligence, big data analytics, and Internet of Things. These transformative technologies are reshaping every aspect of how businesses operate, from production and supply chain management to customer engagement and service delivery. One of the defining features of this new industrial ecosystem is the blurring of boundaries between industries as traditional sectors converge and give rise to new forms of cross sector collaboration and innovations. From automotive manufacturers integrating smart technology into their vehicles to healthcare companies leveraging data analytics to personalize patient care. The lines between sectors are becoming increasingly fluid, fostering new opportunities for synergy and growth. Moreover, the rise of platform-based business model is fundamentally altering the dynamics of competition and value creation. Platforms such as Amazon, Uber have disrupted traditional industries by connecting producers and consumers directly, bypassing traditional intermediaries and redefining the rules of engagement in the digital economy. However, amidst the promise of innovation and disruption, challenges abound for businesses operating within this emerging industrial ecosystem. Concerns about data privacy, cybersecurity, and ethical AI loom large, threatening to undermine trust and confidence in the digital infrastructure upon which the ecosystem relies. Moreover, the unequal distribution of the benefits of technological advancement raises pressing questions about equity, inclusion,
and social responsibility in the digital age. In conclusion, the emergence of this new industrial ecosystem represents both a challenge and an opportunity for businesses and society at large. As we navigate through this transformative landscape, it is imperative that we embrace the potential technology to drive innovation and prosperity while remaining vigilant in addressing the ethical, social, and environmental implications of our actions. By fostering collaboration, transparency, and responsible stewardship, we can ensure that the emerging industrial ecosystem serves as a force for positive change, enriching lives and driving sustainable growth for generations to come. As we have gathered here, let us embrace the diversity of thoughts and experiences that each one of our guests brings to the table. Together, through meaningful dialogue and shared perspective, we can foster international cooperation and pave the way for a brighter, interconnected future. May this conference be a platform for a fruitful discussions and impactful outcomes. We are overwhelmed with the gracious presence of our guests. Thank you so much. Thank you, ma'am. It was indeed a great learning. If money is your hope for independence, you will never have it. The only security that a man will have in this world is a reserve of knowledge, experience, and ability. So, without taking too much time, I would request Professor Dr. Shamsher Sir, Vice Chancellor HBTU, to refine us with his glorious words. Give a huge round of applause and welcome him. Good morning, Professor J.P. Pandey, Honorable Vice Chancellor AKTU, who is attending this conference online. Today's international key speaker, Professor Dr. Yogendra Kumar Mishra-ji, who is coming from University of Southern Denmark. Our national speakers for today's function, Mr. Praveen Kumar Devedi, founder and president of Avok India Group, Ms. Akanksha Swarup, Joint Secretary of Viren Swarup Memorial Trust, Dr. Professor Gauri Singh, Director of this institute, faculty member of the institute, esteemed guests, fellow industry professionals, my dear students, ladies and gentlemen, good morning to all of you again. It is an absolute honor to address such a distinguished audience gathered here from India and abroad today on a topic that is crucial for the future of industrial sector. Today, I would like to talk about the importance of embracing change and transformation in the industrial ecosystem, a topic that resonates deeply with all of us. When you talk about the change is really very difficult to handle. Very, very difficult to handle. But we have to handle. We have to manage this change. As a normal routine life, if a teacher or a doctor or a guardian or anybody who hears us, if they suggest little bit change in our lifestyle, we are very much furious. ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता. But the care and love and affection, this they show to you that in case you change this lifestyle, it is better for you. Many times we used to do it, but for some time, and again we come to the normal routine. And when the change is again reverted back, there is no use of it. We have to manage change. We have to
go with the change in the consistent manner. Then only the fruits of the change will come to you. If you just recall the sentence, the statement of Greek philosopher Heraclitus in 500 BC, long way, he said that, quote, change is only constant in life. And in another statement, he said, no man ever steps in the same river twice, for it's not the same river and he is not the same person again. Unquote. This statement is true for everybody and particularly for the industrial sector, which is currently undergoing a technological resilience, and the wind of change are blowing, and they are bringing with them a storm of innovation, disruption, and transformation. As we are gathered here, we find ourselves at a critical juncture where adoption is not just a strategic choice, but an essential existence. Although adoption change is very difficult, but we have to adopt the change to remain in the highly competitive environment. If you just recall, when the computer was introduced in 1980s, it was human cry in the public that it is not good for us and will eat away the jobs. But now, if we just see the reality in our institution in HPTU Kanpur, all IT students, computer, IT, MCA, they are getting 100% placement and very good packages. But that time, if you just say that the computer is just eat away our job, it is not good for us, then imagine what would have happened. Now you can imagine the life without computer. You cannot imagine life without computer. Further development to laptop, tablets, and now mobile phone, along with the use of AI, machine learning, robotics, followed by use of digitization, has made life very comfortable. And system has now fast, working fast, and also is more responsive. Nowadays, innovation is needed in every field. It can only be possible when we adopt the change required. Policies and technology have a critical role in the fostering an environment that promotes innovation. When this is done consistently over time, the organization as a whole develop an innovative culture. Let us begin by acknowledging the three powerful forces that are reshaping the industrial landscape in India. First, the changing workforce. India is experiencing a significant demographic shift, with a large population of young tech-savvy individuals. By 2025, India is projected to have the largest workforce globally, with approximately 65% of the population under 35 years. These digital natives bring fresh perspectives, a hunger for purposeful work, and an affinity for dynamic environments. They seek roles that leverage technology, leaving behind repetitive manual tasks. And individual leaders in India, we must harness technology to create engaging, intellectually stimulating roles for our workforce. Second, fast-moving ecosystem. India's industrial ecosystem are rapidly evolving, becoming more interconnected and digitally driven. Digital platform facilitates seamless collaboration and exchange and agile in management. To thrive, Indian industries must continuously fine-tune their processes, supply chain, and customer interactions to keep pace with the ecosystem velocity. Digital disruptors, the influence of digital giants that Amazon, Google, and others is reshaping industries worldwide, including India. Their innovative business models and customer engagement strategies are setting new standards. Indian industries cannot afford to remain passive observers.
They must actively integrate technology into their operation and stay competitive. The fourth industrial revolution, that is Industry 4.0, is a prime example for such transformation. It represents the convergence of advanced technologies like augmented reality, artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, and cloud technology to revolutionize production. Even recently, many big software companies have laid off their employees due to substantial use of AI. This advanced analytics continue redefining the potential of global business operations. Let us consider more automotive power of change. Starting with automotive in Thailand, it has evolved into a hub of automotive production, leveraging advanced manufacturing techniques and digital technologies. Similarly, a garment industry that is under remarkable transformation in Bangladesh, becoming one of the world's leading apparel exporter through digitalization and process innovation. Child salmon farming and processing industry is another testament in the industrial transformation, where the adoption of modern aquaculture techniques has positioned the country as a top producer. And let us not forget Singapore industry sector, which has successfully transitioned from labor intensive to knowledge intensive operations, setting a benchmark industrial development. These examples underscore the transformative power of embracing change. They serve as beacons guiding us towards the future where the industrial ecosystem is more efficient, productive, adaptable, and resilient. Let us explore the values of embracing change and transformation can unlock the Indian industrial companies. First, increase revenues. Technology is not just enabler, but a revenue accelerator. By leveraging data-driven insights, predictive maintenance, and personalized customer experiences, Indian industries can unlock new revenue streams. The industrial sectors in India has vast untapped potential waiting to harness. Expanded margins. The automotive process optimization and supply chain digitization lead to cost efficiencies. These margins expansions are critical and substantial growth in India. In Indian industries optimize their as Indian industries optimize their operations, they create room for innovation and investment. Third is new business model. In the Indian industrial sector can reimagine its business model. Services, outcome-based contracts, and circular economy approaches are within the reach. These models align with the changing expectations of Indian customers and stakeholders. Let us delve into some compelling statistics that underscore the urgency of transformation efforts in India. Workforce dynamics. Now, millennials constitute over more than 50% of US workforce and whooping 75% globally by 2025. Gallup reports that 21% of millennials have changed their jobs within past year, and 60% are open to new job opportunities. This means that the Indian industries need to make themselves attractive to this demographic to complete the global market. Adoption of new technologies. According to recent reports by McKinsey, Indian companies that have embraced digital technologies have seen a 14% increase in revenue, a 4% increase in profitability, and 5% increase in productivity. This underscores the importance of adopting technologies to remain competitive. Impact of Industry 4.0. According to recent study by McKinsey and Company, Industry 4.0 technologies could generate an additional $5.2 trillion in global economic output by 2025. This represents a tremendous opportunity for Indian industry to tap into this potential and drive growth. The government of India, whose to manufacturing through the Make in India initiative, has
garnered the considerable attention from the industry and brought the spotlight back on the manufacturing sector. It is now formulating a national policy for advanced manufacturing, which would be one of the key tools to attain its objective of increasing and continuing to manufacturing output. There will be tremendous impetus towards modern manufacturing, including advanced materials, advanced robotics, and 3D printing among these. Now, Industry 5.0. Industry 5.0 has come, which is characterized by there are three things which has been added on Industry 4.0, characterized by human-machine collaboration, customization, sustainability is another point which has been added, ethics, collaboration, resilience, and adaptability. This will further take industries to next higher level, keeping sustainability on the top priority. Let us heed to the call of change. It is not a challenge to be feared, but an opportunity to be embraced. Together, let us embark on this journey of transformation, shaping a brighter, sustainable, and more inclusive industry landscape for generations to come. There is need of periodically redefining and recalibrating the vision statement, mission, and strategies to keep pace with ever-changing global scientific and disruptive innovative landscape, industrial and technological breakthroughs. At the end, I request all the present here to ensure sustainable development, to try to reduce, reuse, and recycle the resources, and do our best in the respective professions to make our country a developed country by 2047. I thank Director Dr. Gauri Singh Gaur, Director of the Institute, and the organizers to invite me in this function, and I wish a very successful conference. I am sure that outcome of this conference will certainly help the industry and scholars. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you, sir, for your informative and illuminating words. Your expertise and insights greatly enriched the experience of the attendees, and we are truly thankful for your incredible contribution. Moving further, it's my extreme honor. Just, uh, just wait for a minute. We'll join soon with our guest online. Moving further, it's my extreme honor to introduce you all with a leading personality, Professor J.P. Pandey sir, Vice Chancellor of AKTU, Dr. Abdul Kalam Technical University, who has joined us through online mode. Professor Jaiprakash sir has served as the Vice Chancellor of Madan Mohan Malviya Technical University, MMTU. He obtained his BTech degree from Ram Manohar Lohia University, Faizabad in Electrical Engineering in 1987 and PhD from Uttar Pradesh Technical University. Under Sir's guidance, MMTU became the first technical university in Uttar Pradesh to get NAAC's A grade. Earlier, Professor Jaiprakash sir has served as AKTU's Controller of Examination. He had introduced digital evolution and had an online question paper delivery system. He has more than 30 years of experience in the field of teaching, industry, and administration. He has published more than 30 technical papers in peer-reviewed journals, including IEEE, and in conference proceeding, guided 5 PhD scholars and has 3 patents. We are extremely fortunate that you embark us with your magnificent presence. So I would request our conscientious Professor J.P. Pandey sir to illumine us with his edifying information. Industry and administration. He has published more than 30 technical papers including I conference proceedings. Yes, sir. Has 3 patents. Thank you. We are extremely fortunate that you embark us with your presence. So I would request our conscientious Professor J.P.
के अवसर पर जो एम्ब्रेसिंग चेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पर आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर हमारे डॉक्टर सुखदेव जी ऑनरेबल वाइस चांसलर कानपुर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इंटरनेशनल की स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर योगेंद्र कुमार मिश्रा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न डेनमार्क। की स्पीकर मिस्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी फाउंडर प्रेसिडेंट है डॉक्टर मिस्टर डी स्वरूप चेयर पर्सन ऑफ वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल ट्रस्ट सेक्रेटरी वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल ट्रस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल ट्रस्ट डॉक्टर गौरी सिंह और डायरेक्टर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी पार्टिसिपेंट हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले संस्थान को मैं इसकी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है और उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पर ये आयोजित कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और ये बड़े सही समय पे आपने शुरुआत करी है और फिर हम पूरे देश में इस तरह से हर संस्थान पार्टिसिपेट करेगा, चीजों पर डिस्कस करेगा और जो इसका आउटकम होगा वो लेके अगर आएगा तो निश्चित तौर पर हम लोगों के पूरे देश को विश्व में लीडर के रूप में स्थापित मैं इससे पहले कि हम लोग बहुत अच्छा है इसमें दूसरे देश की जो लैंडस्केप है उसमें हमारी भूमिका है, हमारे देश की भूमिका है और सीएमएस के फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो भूमिका है उस पर थोड़ा सा हमारी भूमिका कैसे है। आपको याद होगा जब 300-400 साल पहले अगर हम लोग लेके आए भारत तो विश्व का जो 25% व्यापार होता था वो हमारे देश से होता था। 1919 हम इसलिए 1919 समझे कि आपकी वेबसाइट से कोई यूट्यूब चल रहा था ऐसी की आवाज है, सॉरी है। तो अगर आप 1919 अपना वो लीजिए कि 1919 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय हमारे देश में परिवर्तन शुरू हो गया था, स्वतंत्रता मिलने वाली थी। तो 1919 में हमारे पास जो वर्ल्ड का जो व्यापार का जो ट्रेड शेयर था वो 4% था। अब आप सोचिए कि जो 25% का जो शेयर था वो 4% तक हम लोग लेके चले आए। कारण कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं, हम लोग इतिहास पढ़े हैं और इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला गया हो रहा होगा उस समय, क्योंकि हम 25% व्यापार को लीड करते थे। आज 4% पे 1919 में आ गए और आज 1919 के बाद हमारी जो 2023-24 में हम लोग हैं तो 4.8 के करीब शेयर है हमारा। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन होने में 60 वर्ष लगे और अगला 1 ट्रिलियन होने में हमको 12 साल लगे और जो तीसरा 1 ट्रिलियन बना, मतलब 3 ट्रिलियन जब हम हुए तो वो 6 साल में बना। और आज की डेट में हम 4.1 के करीब हमारा जो इस समय जीडीपी है 4.1 ट्रिलियन और हमारा देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब हमारे से ऊपर कौन से लोग हैं? हमारे से ऊपर जापान है जिसका 4.28 के करीब जीडीपी है आज की डेट में। अगला जो जापान से ऊपर है वो जर्मनी है 4.32 के करीब। तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारा जो रेशियो है, जो हमारा ग्रोथ रेट है, वो इस बात को इसका इशारा कर रहा है कि जिस तरह से हमारा ग्रोथ रेट है और जापान का ग्रोथ रेट है और जर्मनी का ग्रोथ रेट है, उसको तो हम लोग आने वाले कुछ दिनों में ओवरकम कर देंगे। नाउ वी विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड।
लेकिन जो दूसरा जो वो है, दो और ऊपर हमारे हैं, वो अगला नंबर चाइना का। चाइना का करीब 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। उसके बाद अमेरिका है 28 पॉइंट सब, उनको भी आप 29 मान लो आप। तो हमारा अगर मान लो हमने जब जर्मनी को भी पछाड़ दिया, तो हमारे अगला जो टारगेट होगा वो चाइना है, और चाइना और हमारे बीच में गैप बहुत ज्यादा है, और अमेरिका का तो और ज्यादा है, 29 ट्रिलियन के करीब है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे लोगों को फोकस करना है वो कैसे करना है। अब मैं अमेरिका के जो 29 ट्रिलियन में कंट्रीब्यूशन मैं बताना चाहता हूँ किसका किसका है। ऐसे 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 तो लोगों का, बहुत लोगों का होगा। हम कुछ ऐसे प्रोमिनेंट नाम लेंगे जो जो आप लोगों भी जानते हैं। गूगल 3 ट्रिलियन की कंपनी है। अमेरिका के जीडीपी में वो 3 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन करती है। एनवीडिया आपने सुना होगा, जो आज की डेट में एआई पर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। एनवीडिया इज शेयरिंग 80% ऑफ द मार्केट शेयर वर्ल्ड का, जो सही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो कर रहा है। एनवीडिया का शेयर है, वो भी 3 ट्रिलियन के करीब है। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट 2 ट्रिलियन है, आपका एप्पल का है, वो भी 2 ट्रिलियन की कंपनी है। फेसबुक 1 ट्रिलियन की कंपनी है। ऐसे लोगों के कंट्रीब्यूशन है जो, और ये क्यों है? अगर आप एक 1 ट्रिलियन की कंपनियों का एक क्लब बना था, तो जिसके अंदर 6 कंपनियां हैं, उसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, एनवीडिया है, फेसबुक है, और एक कंपनी ऐसी है जो वो सऊदी अरेबिया की जो रिफाइनरी की कंपनी है ना, वो है। केवल एक कंपनी ऐसी है उस 1 ट्रिलियन क्लब की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। बाकी सब लोगों का, जब इन लोगों ने काम शुरू किया था तो ये स्टार्टअप रहे होंगे। फेसबुक स्टार्टअप रहा होगा, फेसबुक ने आपके व्हाट्सएप को परचेज किया, व्हाट्सएप भी एक स्टार्टअप रही होगी। वो आज की डेट में क्यों आगे हो गए, और हमारी भी कंपनियां हैं, हमारे पास इंफोसिस है, विप्रो है, महिंद्रा है, एलएनटी है, बहुत सारी। एलएनटी चलो आप थोड़ा अलग से ना, बट हमारी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, और आपके पास प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। हम सर्विस सेक्टर को लीड कर रहे हैं पूरे विश्व को, बट हम प्रोडक्ट सेक्टर में लीड नहीं कर पा रहे हैं। अब जब भी कभी कोई प्रोडक्ट होगा आपकी कंपनी में, तो उसका पेटेंट होगा। हमारे पूरे इस इकोसिस्टम में पेटेंट के मामले में ज्ञान हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिसर्चर हैं, उनको बहुत कम है। हम पेपर पब्लिश कर देते हैं, हम एक कंसेप्ट आइडिया नोट लेके आ जाते हैं, बट उसका पेटेंट नहीं करते। और जब आप पेटेंट नहीं कराओगे, तो आज की डेट में मान लो कोई स्टार्टअप है, वो बड़ा बनना चाहता है, तो उसका अगर मान लो पेटेंट नहीं होगा, तो यू विल नॉट गेट मनी। एप्पल का पेटेंट है, माइक्रोसॉफ्ट का पेटेंट है। माइक्रोसॉफ्ट 95 में माइक्रोसॉफ्ट बनी है, जब इन्होंने विंडो 95 लेके आए। विंडो 95 से पहले वो डास का 3.10 वर्जन था, जिसका अपग्रेडेड वर्जन था आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो 3.1 का अपग्रेडेड था विंडो 95। और आपको बताते हुए मैं बता रहा हूं, मैं ये अपने लिए गर्व की बात है कि जब विंडो 95 की जो डेवलपमेंट टीम है, उसमें 9 लोग रहे होंगे, और भी लोग रहे होंगे, जिनमें 9 ऐसे थे जो भारतीय थे, और उसमें एक केवल इंडियन है जो सेकंड जनरेशन अमेरिकन था। वो बाकी सब फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन थे। एमटेक करने गए, वही नौकरी मिल गई, वही रह गए, वही शादी कर लिया उन्होंने, वो सेटल हो गए। माइक्रोसॉफ्ट 95, विंडो 95, उसने बिल गेट को बिल गेट बना दिया, और माइक्रोसॉफ्ट को, क्योंकि वो प्रोडक्ट था। हम लोग प्रोडक्ट पे काम करना है, और अच्छा है इन्होंने जैसे हमारे को चीजें दी है कि वी आर गोइंग टू चेंज द लैंडस्केप। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हम टेक्नोलॉजी यूज करने में विश्व में नंबर 1 है। कोई भी अच्छा, नंबर 1 क्यों है? हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। अगर आप कोई भी स्पेशल
टूथपेस्ट बनाते हैं तो वो रोज सुबह मॉर्निंग में कितना कंज्यूम होने वाला है, और हम दूसरे दिन फिर कंज्यूम करेंगे। हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारी आज की डेट में स्ट्रेंथ है, हमारी पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ है। और अगर हम लोग संस्थाओं में इन सब चीजों पर फोकस करेंगे, जैसे एक चीज लिखा हुआ था, प्रोड्यूस, कंज्यूम एंड इनोवेट। इसको रिवर्स कर रहा हूं मैं, इनोवेट, प्रोड्यूस और फिर कंज्यूम। प्रोडक्ट बनेगा, इनोवेट करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे, फिर स्टार्टअप कर जाएंगे, तो एक प्रोडक्ट के रूप में, और पेटेंट आपके पास होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और ये जो ग्रोथ है हमारी आज की डेट में, आपको मैंने बताया कि 4 ट्रिलियन पहुंचने में हमको 6 साल, 3 ट्रिलियन पहुंचने में जो लास्ट का एक है वो केवल 6 साल में हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि पूरे देश में इस तरह की एक इकोसिस्टम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, जो निश्चित रूप से हमें विश्व का गुरु बनाने में मदद करेगी। और हमारी जो केंद्र सरकार ने एक टास्क भी बड़ा करके दिया है कि 2047 में हम विकसित भारत होंगे। विकसित भारत किस चीज के लिए होंगे? हमको लीड करना है ना, हम या तो टेक्नोलॉजी बनाने में लीड करें, या हम कंजम्पशन में लीड करें, या हम हमारी जीडीपी इतनी हो जो अमेरिका को पछाड़ देगी। अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है वो चीजें अच्छी नहीं है उनके लिए, लेकिन हमारे लिए हमारे सकारात्मक है। और हमारे अगर संस्थान, सीएमएस जैसे संस्थान भी अगर इस लीड ले रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को बधाई दी कि आपने एक नया चीज है। जब हम लोग डिस्कशन करते हैं ना, तभी चीजें निकल के आती हैं कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम पे तो डिस्कस करते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर ए सोल्यूशन आउटकम। तो ये अच्छा है, आपने बहुत अच्छा करा है। दूसरा, एक मेरा चूंकि ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा अपना टास्क स्मार्ट रखें। स्मार्ट टास्क, आप लोग मैनेजमेंट के लोग हैं, आप जानते नहीं होंगे कुछ लोग यहाँ पर, व्हाट इज स्मार्ट, SMART। स्मार्ट मॉडल होना चाहिए आपका, जो भी इसमें आपने दिया है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, एआई के बारे में हम बात कर रहे हैं। एआई आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं अभी कल शाम को देख रहा था कि कुछ एआई पे कोर्स चला है, तो आईआईएम लखनऊ, आईआईएम अहमदाबाद एआई का इस्तेमाल मैनेजमेंट में कैसे करना है, इसके लिए उन्होंने कोर्स लॉन्च किया है। 11 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स है, एडवांस सर्टिफिकेट है। तो मैंने सोचा मैं भी सीख लूं थोड़ा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और न समय होता है। तो अगर सीखेंगे नहीं तो हम किसको सिखाएंगे? हमारे लिए अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम ट्रेन नहीं होते। हमारे पास इस समय आपके लिए जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं उनको ये बताता हूँ मैं कि आपके लिए चैलेंज इस बात का है कि आपके जो लड़के आपके क्लास में बैठे हैं वो ज्यादा अपडेटेड हैं आपसे, हो सकता है ऐसी सिचुएशन होगी। और ये होगी तो हमारे लिए एज ए फैकल्टी मेंबर हम बच्चे को क्या सिखाने के लिए आए, जो कि ज्यादा नॉलेज है। पहले क्या होता था कि लाइब्रेरी में किताब हमने ले ली, तो ये हम एज ए स्टूडेंट में अपना अनुभव बताता हूँ, हम लोग ये ढूंढते थे कि टीचर किस किताब से पढ़ा रहा है, उस किताब को ढूंढते थे क्योंकि उस किताब से क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन आज की डेट में तो सब ओपन सोर्स अवेलेबल है, सब गूगल पे या जितने भी हमारे पास अवेलेबल, आपके पास चैट जीपीटी है, बहुत सारे एआई के मॉडल अवेलेबल हैं। तो आज की डेट में लड़का हमसे ज्यादा अपडेटेड हो सकता है, उसमें मानने की जरूरत नहीं है। जो सामने की हमारी कमजोरी है वो मान लेने में कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बार फिर, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है स्मार्ट पे, हम लोग कहते हैं स्मार्ट मतलब कोई भी अगर आप टॉपिक लेते हैं ना या कोई भी टास्क लेते हैं तो स्मार्ट क्यों होना चाहिए? स्मार्ट केवल इस चीज का नहीं है कि आपके कपड़े अच्छे हैं, आप देखने में अच्छे लग रहे हो। स्मार्ट जो हमारे मैनेजमेंट का है, जो हमारे इंजीनियरिंग में हम अडॉप्ट कर सकते हैं, वो है एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। कोई भी आप गोल सेट करो, आप स्पेसिफिक गोल होना चाहिए आपका। स्पेसिफिक नहीं होगा तो आपका एनर्जी जाया होगी और यू विल नॉट गेट आउटकम। एम मेजरेबल होना चाहिए आपका गोल, मेजर होना चाहिए। जैसे मान लो चांद पे जाना है, 1 मिनट थोड़ा होल्ड के लिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, हम थोड़ा रिसीव कर लेते हैं, देन हम फिर जुड़ रहे हैं।
हमारी आवाज आ रही है? तो जो हम लोग स्मार्ट पे बात कर रहे थे ना, स्पेसिफिक टास्क होना चाहिए, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग ये जो इवेंट कर रहे हैं, इसमें हमारा स्पेसिफिक टास्क है कि ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो ये हमारा स्पेसिफिक टास्क है। अच्छा, अगला जो टारगेट है एम, ये मेजरेबल होना चाहिए। जैसे आपको मान लो चांद पे जाना है, तो चांद पे जाने की डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, तभी तो आप प्लान करोगे। या जैसे मान लो आपको कहीं पे लखनऊ आना हो, कानपुर से, तो आपको डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, कितना तेल भरवाए गाड़ी में। दूसरा जो ए है स्मार्ट का, दैट इज अटेनेबल, अटेन करने का टास्क होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि वो एक रियलिस्टिक टास्क हो और आप अटेन न कर पाए। आर स्टैंड फॉर रिलायबिलिटी, रिलायबल टास्क होना, अनरिलायबल टास्क आप करेंगे भी नहीं और समय भी बर्बाद होगा और आप उससे कोई आउटकम नहीं पाएंगे। एंड जो टी है लास्ट का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंडस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है, या हमारा भी इकोसिस्टम है, आपका भी इकोसिस्टम है, दैट हैज टू बी टाइम बाउंड। कोई भी प्रोजेक्ट आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। हम लोग इसमें फेल करते हैं, हम टारगेट तो रखते हैं 2 साल में इस बिल्डिंग को बना लेंगे, बट 90% केसेस में 2 साल में वो बिल्डिंग नहीं बनती है। उसका क्या होता है, नुकसान क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है कंपनी की, उसका बिल्डिंग की, और हमारा तो समय भी जाया होता है, कॉस्ट भी ज्यादा लेते हैं। और जो यूटिलिटी हम 2 साल पहले अचीव कर सकते थे, वो 2 साल देने के बाद अचीव करते हैं। उसकी जो टाइम की कॉस्ट है, वो हम लोग मेजर तो नहीं करते, बट वो बड़ा यूज होता है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा आपने इनिशिएट किया हुआ है। और इसके लिए पूरे मैनेजमेंट के बहुत सारे लोग हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। और फैकल्टी मेंबर जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, वो भी बधाई की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your enthusiastic information. Your thoughts demonstrate your deep knowledge of the subject and resonated strongly with the audience. Thank you, sir, for joining us. Give a huge round of applause to Professor Jayaprakash, sir. By now, we come to the most important part of International Conference 2024. It's time for an important announcement, and I'm so excited to share this news with all of you today. To add a touch of splendor to our event, we have the Souvenir launch, where the hard work of the academicians and the students are exhibited. So I request all the delegates present over the dais to do the honors to launch the souvenir. May I request our respected Professor Dr. Shamsher sir to release the ribbon and launch the souvenir. Can we all put your hands together? May I also request the students to hand over one of the copy of the souvenir to each galaxy of office bearers and committee members. The
articles of the Souvenir is written by the scholars, researchers, and students on the relevant topic of our theme, embracing change and transformation in industrial ecosystem. Thank you everyone for creating our history, and this moment will be written in the golden words of the history of College of Management Studies. Thank you everyone. Before moving further, I would like to take a moment to thank our Honorable Professor Dr. Shamsher Sir for giving us his valuable time. Due to his busy schedule and lined up tasks, Sir can't join us further, but it's our honor that you embark us with your glorious presence. It's a great learning to hear such a knowledgeable personality who enlightened us with his powerful impact. I would request our director ma'am to present a memento to our honorable professor Dr. Shamsher sir with a token of gratitude. Thank you, sir. Rise from your chairs, everyone, and thank to us, sir. Give a huge round of applause, guys. Student, please maintain the decorum of the hall. Now, I would like to move on to our technical session 1, where we will be enlightened by the information given by our guest of honor and the impactful personalities. They will be sharing their deep knowledge and expertise with us, which we can use for our future endeavors. Now, I would request Professor Dr. Yogi Kumar Mishra sir to acknowledge us with his striking words. Keep your hands tapping, audience, for Dr. Yogi Kumar sir. Yeah, so a very good afternoon, everyone. It's a pleasure and honor for me to be here. And I sincerely thank Professor Pandey, Professor Samsher, and Sharon family. You are doing very important task. Its contribution to education is a direct contribution to the society. So that's really a pleasure and honor. Thank you very much. And I would like to thank Mr. Divedi and most importantly Dr. Go. Because of you, I am here. So thank you very much for inviting, and then it's my pleasure to be here. Okay, I also switch to Hindi basically, but I can also switch. I will switch in between. जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा. I am a physicist. I studied physics. I am a material scientist, and I am basically a professor as well. But I am teaching physics, quantum mechanics. Probably you have heard. Probably you have not heard. मैं क्या देख रहा था कि when I was in the morning, चारों तरफ कूड़ा पड़ा, कहीं कहीं कूड़े के ढेर मिल जाएंगे आपको, कहीं कहीं गंदी चीजें मिल जाएंगे. और एज ए इंडियन हम चलते हैं तो हमारा ये एटीट्यूड होता है कि कितना गंदा है, क्यों है, क्या है, बेसिकली, और क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को. बट जब एक विदेशी आता है तो वो भी उन्हीं चीजों की फोटो खींच कर लेके जाता है अपने साथ.
बट मोटिवेशन क्या होता है, वो क्यों फोटो खींच करके लेके जाता है, वो इसलिए आया होता है कि हाँ इनके पास ये प्रॉब्लम है, अब मैं जा रहा हूँ अपने देश में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढूंगा और इसके बाद 5 साल के बाद आकर के इन्हीं की प्रॉब्लम से इन्हीं को सोल्यूशन बताऊंगा और इसके बाद जो है दैट विल बी माय बिजनेस. So there are two perspectives how to see a problem. There are so many kind of problem, but believe me, every problem is actually a kind of going to give an opportunity. Basically, जो लोग वेस्ट के कंट्रीज जो बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट, they are already very good there. ना तो उनका पानी खराब है, ना तो उनके पास गंदगी है, कुछ भी नहीं है, but they are talking about those things because क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ करके आपको ही बेचेंगे and they are going to get basically the benefit from that. That's how the world is developing. So basically हम जो चारों तरफ देखते हैं अपने समाज में हर तरफ, we have to think about कि हाँ इस चीज का सोल्यूशन क्या हो सकता है, इससे पहले कोई और ढूंढे. अगर हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दें then that's going to be direct economy for us. This should be the attitude. You might have heard the news from Bangalore from last 2-3 days. People are crying about the water. This is going to be a big problem. This is going to be a very big problem. Lack of water and the quality of water, both are going to be a very big issue. Sustainability, that's something we need to talk about. What is sustainability? मैं एटलीस्ट 3.5 डिकेड्स की मेमोरी है. मैं इंडिया में गांव में जो है पैदा हुआ हूँ, वहाँ मैंने देखा है, और मैं यूरोप के सबसे बेस्ट, दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री में रहता हूँ. I have seen the situation over there. In 1990s, before 1990, there were no plastic bottles. Also, the recycling, all the old cloths, everything was very good recyclable. We were eating, हम लोग पत्तल के जो है पत्तों के बर्तन में खाना खाते थे पार्टीज में सब जगह. उस टाइम वो लोग प्लास्टिक्स पर चल रहे थे. Then they introduced plastics into our ecosystem, and now they are telling us that we should go back and eat on the green plates which are made out of plants. So it's a kind of ecosystem. We have to care about ecosystem very carefully. Water management, water and climate. We need oxygen for everyone. After 20-30 years, in 2050, what will we be talking about? What will be the challenge? Do we have water, enough water to drink for everyone? Do we have enough oxygen for everyone? These are going to be the problem, basically. And what is coming up as a future? We have accumulated so much plastic. We have accumulated so much garbage in our ecosystem. This is going to generate future opportunity how to recycle those waste to wealth. That's what we are talking about. That's what everyone is talking about. If we are good enough in recycling our waste into valuable products, that is going to lead to the sustainable development. So we have to care about the environment, and at the same time we have to develop the technologies which allow us that we can convert something, a kind of waste into the valuable product. How to harvest, and there we need help from everyone. So in the good old days, if somebody studied physics, if somebody studied chemistry, somebody studied management, somebody studied art, then we were really confined in a very narrow direction. Okay, this is my field, I don't have to do anything. Today, everything is very well connected, very well connected. We as a scientist, we can develop a solution, but we cannot implement the solution. This is something what has to come from the management side. That we really need to
able to implement the solution into the society. So it's good that you are studying management, but it is equally important that you are talking with the people from other fields, and at the same time you are also trying to find out the challenges that हमारे हमारे आसपास क्या challenges हैं, हमारी सोसाइटी में क्या challenges हैं, और बाहर की सोसाइटी में क्या challenges हैं. अगर वो हमारी problems देख सकते हैं तो आप भी उनकी problems देख सकते हैं basically. So we need to think about recycling technologies जो हमारे surroundings में, and we need to find out appropriate solutions into the society. India and abroad. 30 years before, 40 years before, we were talking about a local, something from Kanpur, something from UP, something from India. But today, everything is global. You have mobile, you have glasses, you have whatever things you are using, they are coming from different parts of the world. So very well connected. It's all related to the business community, something who has developed. Everybody is trying to sell everyone nice stuff. That's what was mentioned as an economy. And we have to think about not about local perspective, but on a global perspective. What can we export into the world as a kind of really something? So you might be following the development which are going on in India, recently highlighted by Professor Pandey. Also, progress last 10 years, we really have made significant progress. Also, it's not only the progress in terms of the number, what we are talking about, trillion, billion, that is very fine. We need to change our perception in the world, that how basically the reliability index is the most important. And in the European context, they used to see Indians differently. Now they used to see Indians in a very different way. Indians have gained very high respect abroad. You are seen as a knowledgeable people, basically very skilled people, very polite and very humble people, basically, who can really work, and you are very honest, basically in terms of working. So if you will promise, you will deliver. And that spirit should be maintained. That is something we learn from our parents, from our home. These things, but they are very very important. If I go and if I do something wrong, if I break the ethics, something in institute, simultaneously this person will be talking to many people, and then kind of it will be the dialogue will be generated. I was talking with Indian ambassador in Copenhagen. We had a meeting together, and the very first thing was he said that since he joined in Denmark as an ambassador, she did not get any complaint about any Indians from Chinese authorities that there was some problem. So she was so happy, and her statement was that, okay, please maintain your spirit, please respect the country's values, rules, and regulations, and everything. And that's really our wealth as well. So this is our real wealth, because then we are basically ambassador of India abroad. So of course, India has a lot of problems, and every problem need to be solved. So that means there are so many kind of possibilities of finding solutions, and each solution is actually an opportunity. So that means, and everybody from outside abroad, they are looking for opportunities, because every opportunity is a direct economy, considering the sustainability and everything. So we have a lot of problems, but what is missing in Europe? Manpower. Who will implement that? They do not have manpower. The population is declining, and there is our rival match. We have so much young population. You can fulfill the desire in Europe or in US, basically,
as a skilled manpower with good ethics. Somehow, in last 3-4 years, basically, the European and other West countries have lost the faith in a country which is our biggest neighbor and competitor. And that is a chance basically for us to now gain the faith. China, I can say openly, Chinese logo पर उनका भरोसा कम हुआ है. And that is an opportunity for Indians to gain basically abroad. So I would say don't look immediately after finishing your studies that okay, what should be your goal? Not just let me finish my study and find out a job or something. Also keep on exploring around basically that okay, what should I study further? Or what kind of experience should I have further so that I can match my future goals? I can go to the much higher level. Basically, I can go abroad and then contribute. Today it is global, whether you are living in Kanpur or you are living in USA, it doesn't make any big difference. You are 12 hours away, 15 hours away from your home. So that's not a problem. So basically, it's now much more needed to start a collaboration between youth in India with a kind of education, training, and everything to the youth, to the requirements abroad. Even there are some universities who do not get enough students to run their courses, whether it's management or it's physics or whatever. So please think about it. And then, of course, when you go to buy a mobile in the market, what what is the deal that you look for? I need this camera, I need this size, and this size, and then the person tells you the price. So there is no collaboration without a mutual agreement and without the need from. So what is really needed as two line I want to say that they really need you, but it's not only a direct need, you need to match their needs as well. You need to match their requirements as well. That is very much needed. So something as a young kind of students, I would like to give you, suggest you, please think for abroad. Don't keep your thinking or a target lower. Always try to have a large goal, high goal, and think on a global perspective what you can basically do and think about problems which are locally around regions and also keep an eye on the problems abroad and that will take you to the much higher level. So with this I would like to end up my dialogue and I don't know material scientist, so if you have any questions whether related to any general question I will be happy to take over. Thank you very much. Thank you, sir, for your influential message and for sharing your expertise and significantly impacting the event. We are charmed by your sharp fluency. It's time to call our most engaging speaker, Mr. Praveen Kumar Dwivedi, sir, to address the conference with his renowned address. Give a big round of applause to Mr. Praveen Kumar Dwivedi, sir. सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज जा रही है पीछे तक? Thank you. So, Honorable VC AKTU Professor J.P. Pandey sir was chief guest. We have heard him, and Professor Dr. Shamsher, Honorable Vice Chancellor at HBTU Kanpur. Our last speaker, Professor Mishra. I think we have all had wonderful and insightful views. Dr. Gaur,
I think she's the Sutradhara of this important event today. And what I feel is that what I would want to talk, because I'm privileged enough to be speaking to you after almost 2 weeks. I had a small dialogue, development dialogue, which I was privileged to be part of. कितने लोग थे उसमें? मुझे कुछ शक्ल तो याद आ रही है, नाम भूल गया हूँ मैं, लेकिन आई कैन सी जिन लोगों को मैंने पूछा था सवाल, और ये प्रूव करता है कि हमारी मेमोरी कितनी शॉर्ट होती जा रही है। किसने किसने मूवी देखी है शॉर्ट मेमोरी वाली? कौन सी मूवी थी वो? नहीं नहीं, एक मूवी में बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है उसकी, आमिर खान की। हाँ देखिए काफी लोगों ने ना। So that is all about the change, you know, something like this happens that you just forget everything what happened last पल में क्या हुआ था, ये आपको पता ही ना चले। जो आपका आज का थीम है, जो टॉपिक है, which is about change and transformation, I don't know how many of you can relate to it. I must tell you, अगर आप लोगों की सबकी जेब से मोबाइल छीन लिया जाए 1 मिनट के लिए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? जान निकल जाएगी। So that will be a change. You know, as Professor Shamsher was talking about something, I don't know how many people could hear that. He was talking about a very, very important thing, which is about river. Anybody remembers when he spoke about river? He said we cannot. There's a saying, we cannot step into the river twice. रिवर में हम 2 बार कदम नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब समझ आया? स्वामी विवेकानंद ने भी यही बोला है कि नदी जो है, नदी इज नथिंग बट चेंज। बिकॉज फर्स्ट टाइम जब पैर रखते हो आप और हटाते हो, दोबारा पैर रखते हो तो क्या होता है? क्या बदल जाता है? व्हाट चेंजेस? हेलो, व्हाट चेंजेस? You're not stepping onto the same particle. We have sir from quantum physics, कभी आप लोग पढ़िएगा quantum physics के बारे में, but the water has changed. The river is flowing. You are stepping into a water which is not the same water, and that is what I think he spoke about. This is a very famous saying also, that you cannot step into the water twice, river water twice. Now, what I want to just explain and make you think is that change. I think change is something which is very, very, this is a very cliche statement. जैसे कि सब लोग बोलते रहते हैं, change is constant, change is constant. सब बोलते हैं, हम सुनते भी रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसके लिए? कभी हमने क्या किया? कितने लोगों ने आज सुबह घर से आए, सेम रास्ते से कितने लोग आए? सेम रास्ते से, सभी सेम रास्ते से आएंगे, हाथ नहीं उठा रहे बिकॉज सब थक गए होंगे 2 घंटे से सुन के, हाथ नहीं उठा रहे। कितने लोग नए रास्ते से घर से आए हैं? न्यू रास्ते से 3-4 लोग नए रास्ते से आए हैं घर से। तो दैट इज अ चेंज। जब कभी रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा आपके घर से यहाँ तक के आने का और आपको रास्ता लंबा लेना पड़ेगा, देन यू क्रिप बिकॉज इट्स चेंज। प्रोफेसर शमशेर also spoke about Industrial Revolution. First Industrial Revolution में कितना समय लगा था पता किसी को? फर्स्ट रिवोल्यूशन जो हुई थी कितनी लंबी थी, कितने पीरियड की थी? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो दिस वाज फॉर 100 years. Second Industrial Revolution, and I will be asking questions, so please, I think अभी के लिए तो जो मैं बता रहा हूँ याद रखना, जाने के बाद तो शायद भूल जाएंगे, 7 दिन बाद 0 हो जाएंगे। हम सब जैसे मैं भूल गया नाम, 3-4 लोगों के नाम पूछे तो भूल गया हूँ। But as Professor Pandey was saying, that unless you take away something from such conferences, the last part of the word smart is time. I think we are all losing time. Time is something which is the most precious commodity in the whole world. I think we must pick up 5 points from such conferences. Even if it is about quantum physics, सर ने बात किया, मैकेनिक्स बात किया, उसके बारे में 2 वर्ड गूगल में कर लो, सीख लो और बोलेगा कि घर में मैंने आज क्वांटम फिजिक्स के बारे में 3 चीजें सीख ली, बिकॉज सर ने नाम लिया, मैंने गूगल किया, मैंने 3 चीजें सीख ली। That's the change which you have brought to yourself. आपकी पर्सनालिटी में वो चेंज आया बिकॉज मैंने सीख लिया। मैंने पूछा अभी सर से, मैंने बोला कि भाई
मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई एम ए बायोलॉजी स्टूडेंट, डूइंग मैनेजमेंट, स्टडीड मैनेजमेंट, नहीं हो पाया, मेडिकल में फेल हो गया, तो फिर पापा ने बोला भाई आईएएस कर लो, लॉ कर लिया, यहाँ घूमते रहे ऐसे वैसे नदी की तरह, फाइनली बैंक में, फॉरेन बैंक में जॉब लग गई, कंपटीशन हुआ, वहां से कहीं और पहुंच गए। सो दिस वाज अ चेंज, एंड द फर्स्ट बिग चेंज इन माय लाइफ हैपेंड व्हेन, आप लोग किसी का घर टूटता है कभी भूकंप में? किसी का घर हाथ बढ़ाइए, कोई भूकंप में टूटा है किसी का घर? टूटा है? नहीं टूटा है। तो एक ऐसा भूकंप आया जिसमें सडनली मुझे मालूम पड़ा कल मेरा घर टूटने वाला है। घर मीन्स द सेंस द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वाज वर्किंग, आई वाज टोल्ड फ्रॉम दिस डेट यू विल नॉट वर्क। मैंने 12 साल वहां काम किया, अब सोचो अचानक से एक दिन चेंज आ गया, भाई साहब जॉब गई, नौकरी गई, नई नई शादी हुई थी, अब आप सोचो क्या होगा। तो दैट इज अ चेंज, एंड दिस सेकंड टाइम जब ऐसा हुआ, then I was very happy because I was prepared. And these are some cataclysmic changes, seismic changes, वो भूकंप वाले होते हैं। आज भी मुझे बात करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, because that is a change which I think you have not faced, and people living in Bhuj, Gujarat have faced it. हम बोलते हैं गुजरात में भाई बड़े पैसे वाले लोग हैं यार, गुजरात में तो शादी अच्छी होती है, जामनगर में सब बड़े मौज से सुनते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है गुजरात में जो भुज में हुआ, जो लोग भूकंप के बाद वापस से जस्ट लाइक ए फिनिक्स उस बारूद से वापस से महल बन गए, कभी सोचा है आपने उसके बारे में? दैट इज द चेंज आई थिंक विच यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू, एंड कोई आपको अगर पर्पसली करेगा तो बुरा लगेगा। इट हैज टू बी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, खुद आपको वो चेंज करना पड़ेगा। आई वाज रिसेंटली वाचिंग ए वीडियो, यू नो, विच इज वेरी वेरी टचिंग वीडियो। आई डोंट नो, किसी ने देखा है? गुजरात का एक ध्रुव पटेल का वीडियो है, ध्रुव पटेल, एनीबॉडी हैज सीन? तो मैं बताऊंगा नहीं, फिर उससे पूछ लूंगा, नहीं देखा होगा। ये बच्चा डायमंड मर्चेंट का फैमिली का है, पॉर्श गाड़ी है फैमिली में, 3 पुश्तों से डायमंड मर्चेंट में काम चल रहा है। कहानी है, सुनिए इसको, और कभी दिखेगा वीडियो वरना मुझे बताइएगा। मुझे किसी ने बॉम्बे से भेजा अभी 2 दिन पहले, तो यहाँ की कानपुर की एक मारवाड़ी फैमिली, उनको दिखाया मैंने, उनको भेजा, तो ही वाज वेरी हैप्पी। सो दिस गाय टेल्स ए स्टोरी कि उनकी फैमिली में एक ट्रेडिशन है, देयर बिजनेस, कि 45 दिन के लिए बच्चे को जब 20 साल का हो जाता है तो वो घर से बाहर निकाल देते हैं 45 डेज के लिए। एक टिकट देते हैं, लिफाफे में बंद, सील बंद होता है, उसको पता नहीं होता टिकट में क्या है। उसके बाद कोई घर का आदमी उसको स्टेशन पे छोड़ आता है, रेलवे स्टेशन पे। फिर क्या होता है, अब वो चला गया, उसकी जेब में सिर्फ 5,000 रुपए होते हैं, एक जोड़ी कपड़ा होता है, बस, नथिंग एल्स। अ गाय हु हैज अ पोर्शे मैंशन, बड़ा घर है, 4 नौकर हैं, सब कुछ है, उस बंदे को ये करना होता है बिकॉज इट्स अ फैमिली ट्रेडिशन। अब ये बच्चा जब टिकट खोलता है, लिफाफा, तो देखता है टिकट है, कहाँ का है, कोझिकोड का टिकट है, ट्रेन में बैठ जाता है, ट्रेन आती है, चला जाता है। उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ये है कि आपको 6 हफ्ते बाहर अपना जॉब ढूंढना है, अपने आप रहना है उस 5,000 में, और उसमें 1 हफ्ते आपको अपना बिजनेस भी करना है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लिटिल, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इन शॉर्ट हाउ ही मैनेजेस दैट। फर्स्ट जॉब जो उसको मिलता है, जाता है 4 दुकानों में, रिटेल में, फिर उसको 500 रुपए डेली पे काम मिलता है। एक जो है वो रहता है चाल में, छोटी सी चाल में, उसका दिखाया हुआ है, उसने उसका वीडियो बनाया है, बिकॉज उसके दादाजी का पुराना वीडियो भी पड़ा हुआ है, बिकॉज दे हैव मेड इट। वहां पे कोई शराबी आता है, उसको एक झापड़ मारता है, वो डर जाता है। उसके यहाँ घर में फोन भी अलाउड नहीं करना है, आपको शाम को खाली एक मैसेज करना होता है घर पे कि मैं यहाँ हूँ, बस। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू आस्क फॉर एनी हेल्प, एंड द गाय हैज टू डू। अब देखो 1 हफ्ते जॉब लग गई, खुश हो गया, पर उसको छोड़ना होता है। The condition is you have to leave that job. अच्छा काम कर रहा था, फिर गया दूसरी जगह, वो एक होटल में गया, वहां उसको जॉब थोड़ा उसको अच्छा मिल गया, पैसे 15,000 मिलने लगे उसको। यहाँ पे भी वो उसके जो मालिक थे बहुत खुश हो गए, बोले कि भाई तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। वेटर बना दिया उसको, बोला कि मेरे दादाजी ने सिखाया कि घर में हमारे यहाँ नौकर नहीं चाय लेके जाएंगे, हम लोग चाय लेके जाते हैं, तो that's why I knew what it is, so I was doing it well, so he got impressed. So, but again he has to leave the job after 7 days, so he again makes an excuse कि भाई घर में मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, तो उसको सैलरी दे दी, घर जाओ। अब इसको बिजनेस भी करना है 1 हफ्ते का, तो इसने बोला बिजनेस हम लास्ट में नहीं करेंगे, पहले ही कर लेते हैं, देखते हैं मतलब क्या होता है। अब ये बंदा बिजनेस सोचता है क्या करें, 5,000 में कुछ बचे हैं, कुछ उसने सेव भी कर लिए। अब सोचो अमाउंट ऑफ लर्निंग ही इज गोइंग थ्रू, जस्ट थिंक थ्रू इट। मतलब इफ यू कैन रिलेट टू इट,
I think you are in for a change if you can impose such thing. कितने लोग कभी बाहर गए हैं इस साल में 2024 में कोई किसने अकेले ट्रैवल किया है कानपुर से बाहर? उठाइए हाथ, 4-5 लोग ही हैं, ठीक है। अकेले ट्रैवल, हमारे यहाँ एक बच्चे की शादी हुई, आई विल नॉट नेम दैट गाय, ही टेल्स मी आफ्टर मैरिज, बोलता है कि सर मेरे पापा ने आज तक कभी अकेले जाने नहीं दिया और मैं तो फॉरेन का टिकट लगा के बैठा था हनीमून के लिए अपने, ठीक है। अब बताओ तो भैया फिर फाइनली क्या हुआ हमारे गाँव की शादी के बाद? उनको हम बता रहे हैं एकदम कोजी कूपे में जाओगे, टिकट विकट दे दिया, वहां भी सब इंतजाम है, लौट आओगे बिल्कुल सेफ सुरक्षित जाओगे। थिंक अबाउट इट, एंड दिस पेरेंट इज सेंडिंग देम अलोन। अब लास्ट बात बताता हूँ बिजनेस क्या किया उसने, उसके बाद फिर आगे की स्टोरी है, आई लीव इट देयर ओनली। जस्ट आई वांट टू हाईलाइट द पॉइंट ऑफ चेंज व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस एंड इम्पोज इट ऑन योरसेल्फ। डोंट वेट, पेरेंट्स विल नॉट अलाउ इट। पेरेंट्स चाहते हैं भैया एकदम रुई के फाहे में बच्चा मरना, एकदम मौली डोली बना रहे बिल्कुल अच्छे से, उसको सुबह कपड़े पहना दो, एप्पल खिला दो, ये खिला दो, दूध पी लो सुबह, है ना, ऐसे ही होता है। यहाँ तो कम है, मैं कलकत्ता में था लास्ट वीक, अभी कलकत्ता में तो बड़े से बच्चे को भी मम्मी बाहर खड़ी रहती है जब तक कि वो बच्चा एकदम क्लास के अंदर चला जाए, एग्जाम दे के रोता भी रहता है। आई वाज टॉकिंग टू कलकत्ता गाय ओनली, तो वही मैं बात कर रहा था। तो ये है, आई हैव लिव्ड देयर। सो लास्ट पॉइंट उस स्टोरी का ये है कि उस बंदे ने बहुत सोचा क्या करूं, सोचा अच्छा ऐसा है, सबसे सस्ता काम है मैं नींबू पानी का ठेला लगा देता हूँ। उसने एक कैंटर लिया, नींबू पानी अपने, अच्छा आरओ का वाटर जहाँ रहता था खोली ना, आरओ का वाटर था, उसने उससे पानी नींबू बनाया। अब बोला लगाए कहाँ, वो कहीं गया मार्केट में, वहाँ म्यूनिसिपल वाले आ गए कि भाई पैसा तो ये तो हो ही नहीं था उसके पास। फाइनली ही डिसाइडेड टू पुट अप अगेंस्ट हॉस्पिटल, वहाँ उसने किया और वहाँ पे उसने 7 दिन में उसकी पूरी जो त्वचा थी वो काली हो गई, बिकॉज एनीवेज होता ही है, धूप में आप रहोगे तो आपको तो टैनिंग पूरी हो जाएगी, है ना। And in video he says that again, he goes through all that story. What I want to tell you is, this is something which you have to relate to if you really want to change. Industrial revolution 2 हुई 100 साल में, ठीक है, 3rd हुई almost 60 years में, 4th तो एक डिकेड में हो गई, और 5th तो ऐसी है कि एकदम कनेक्टिविटी आ गई है। जैसे सर ने बोला, you are in the global world, sitting in Kanpur you can behave like a Londoner. I was in Stockholm, मैं गया था डेनमार्क 6 महीने, I was just telling him about that, and I was speaking to somebody, उस बंदे से मैंने बात करी इंडिया के बारे में, he was so excited about India। मेरे होटल के ठीक सामने गोल्फ कोर्स था, तो मैं ऐसे टहलने गया गोल्फ कोर्स में, तो आई प्ले गोल्फ, तो मैं गया गोल्फ के लिए, तो दिखते हैं कम लोग थे वहां पे, ऐसा उनका लोग ही नहीं वहां पे, but this guy I met, he was so much excited about India and India going through, and he had come to India, और नासिक में शायद आया था पहले कभी 10 साल पहले, तो कुछ मेमोरीज थी उसकी। So what I'm saying that you are undermining yourself sitting here if you are just doing the routine work, किताब पढ़ ली, risk नहीं ले रहे हो आप। Most people will interview, अरे सर वो एसी में ही जॉब दीजिएगा सर, वो टेबल वाला जॉब मिल जाए वो ठीक है, तो ठीक है, और पैसे भी ठीक ठाक मिल जाने चाहिए, बिकॉज प्लेसमेंट में ये सब नहीं होगा बाहर जाना पड़े मुझे धूप में, मेरे पापा मम्मी नाराज हो जाएंगे, कहाँ धूप में टहल रहे हो तुम, थोड़ी सी नौकरी कोई सरकारी नौकरी ढूंढ लो, क्यों, सही बात है। So anyways, I'm just saying that, transformation which is happening in the world is really very disruptive, very, I think I would say destructive also. So you have to actually be ready for that VUCA world. Pandemic के बाद इन्फ्लेशन, वर्ल्ड में कई वॉर चल रहे हैं, इन चीजों से आप सब लोग अभी अछूते हैं। थिंक अबाउट इट, कुछ लोग अभी लखनऊ से इंटरव्यू हुए और करीब 4000 लोग सिलेक्ट किए गए हैं, जो गए हैं पता है कहां? Anybody has read that story? 4000 people have been selected from Lucknow and adjoining areas. बहराइच, गोंडा के भी हैं, सब हमारे बहराइच से भी हैं। I was reading that, I was very excited. I told my family also. पता कहां जा रहे हैं वो लोग? They are going to rebuild Israel. हमारे उत्तर प्रदेश से ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं रिस्क लेकर के, इजराइल में बम गिर रहे हैं, रोज सुबह शाम हमास की लड़ाई हो रही है, बट वो लोग जा रहे हैं। So I'm saying there are people, they may not be educated, but they are willing to accept change, and that is what is the ecosystem which we need to develop in ourselves. We need to have that, I think, desire to change ourselves. If we are living in our comfortable, our society, I think
the madam, he was talking about Dr. Pooja Kapoor. I know I had met her in Prague, actually, ambassador to Denmark currently. You know, there are also people. They travel every year. They have transfers. They are different countries. How they adopt? Our ambassadors who are there in different countries. How they adopt? How they change? You know. So out of these people, I can easily say there will be 5 people, 10 people who will be going that route. They will be disruptive. I'm not saying don't obey your parents, don't obey your teachers, do that, but try and do something which is quite different, you know, quite disruptive. Technology is today with you, which can help you. And don't think that I have not done BTech, then only I will do. No, it is not. World is very democratized in terms of education. Any education, Harvard, MIT, anything you can get here, sitting here, without paying for that much also. But the problem is, if we have a journal, we also publish, I think wonderfully written, I was just glancing through the journal. I would want all of you to read that, imbibe about what is written on the blockchain. If you do not, you know, because most of us have a very short span of attention. मेमोरी तो शॉर्ट हो ही गई है, मेरी तो 15 दिन वाली हो गई, आपकी शायद बहुत जल्दी हो गई होगी, हो जाती है. It is fact, because हमारा इतना जंक है हमारे अंदर, we generally are forgetting things. So please read that those things and try and pick up 5 things. कि ये आज की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये 5 चीजें मैंने पिक अप करी हैं. I have written in my journal. I told you last time that you all must have something called journal, you know, and pick up that thing. How many of you have parents in agriculture? Farming में किसी के पिताजी हैं? Farming में किसी के? Nobody has farming. अच्छा, कितने लोग फादर बिजनेस करते हैं? Okay, some people have. कितने लोग जॉब करते हैं? रेस्ट जॉब ही करते होंगे. I don't know. काफी लोग अभी रिस्पॉन्ड करने के मूड में नहीं है, because I think it's high time now. They should all get break. Anyway, so what I'm saying is कि फार्मिंग में statistics बोलती है, BBC न्यूज़ बोलती है कि 50% of Indians are still employed in farming. And the technology and tech adoption, I have been to Bangalore में और आंध्रा में AI के through farming में they are doing transformation. Amount of efficiency, productivity which they are bringing in the cultivation is huge. These farmers, the way they are working. So I think we all need to look at how technology can be utilized in your area which you want to work upon. Okay, and I think all of us. This is why last point I will just ask maybe a couple of more questions and I will end it here, because what we all believe, Japan, sir was saying Japan is just above us. Why Japan is declining in terms of GDP, in terms of our economies, because of course aging population, but study some of the concepts they have. Anyone knows what Kaizen here? Kaizen? Does you know what is Kaizen? Anyone can get up and tell me? So note down कर लो, एक ही word is मैंने बता दिया, बोलते हैं भाई सीख लिया हमने आज. किसी को पता है Kaizen? You will know, I'm sure. As a teacher, of course you can tell about it. Yeah. Absolutely. It's a platform ad. I think we'll see it. So I learn these things. And not only learn as a word and not for GK exam. I'm telling you, ये सब मत करो. सब करके हम लोग अब वो वर्ड खत्म हो गया है कि मुझे जीके में रीजनिंग में पास हो कितने नंबर ला के बस यहाँ पहुँच गया उस जॉब में पीओ बन गए, क्लर्क बन गए, ये बन गए, एमडी बन गए, कुछ बन गए. अरे मजा उसमें है जब उसको जियो जिंदगी को तुमने सीखा है. ये वर्ड लिख के किताब में अपनी डायरी के पन्ने पे कॉन्टिन्यूअस लर्निंग. अब उस पर देखो कि काइजन मैंने अपनी लाइफ में लाया. काइजन KAIZEN, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, you know, which are Japanese concepts, so very, I think, well written. I don't really get amazed by the philosophy they have. हमारे पास भी है. It is not that we don't have it, but what it is that we need to. Last time also I focused on practical part of it. Our education has to come out of the books. Farming हम सब के बाबा दादा करते ही थे. शायद पापा ने नहीं किया, वो चले जाएंगे गाँव से. मेरे बाबा भी करते ही थे. 6 भाइयों में से 4 तो खेती करते थे. मेरे फादर आ गए थे वहां से भाग के कि भाई जॉब करनी है. So
The point I'm saying is that can we go back there? Can we really make some such changes in our life? That is important. So anyways, I have a couple of questions I had written actually. So one I asked Isaac, किसको पता है ट्रैवल कितने लोगों ने किया है. एक लास्ट क्वेश्चन है, कितनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे कोई नहीं है, अरे बहुत लोग हैं देखो अभी. दो लोग तो वहां बैठे हैं, पकड़ लेना उनको, अगली बार जाते हैं सब लोग. क्या सीक्रेट टू नो प्रॉब्लम है? Let's all have problems, I have problem, you have problem, people on dice have, everybody has a problem, but problem are different nature, different degree, different quantum. How we are able to pick up those problems? यहाँ पे 200 लोग बैठे हैं, 200 की प्रॉब्लम लेकर के देखो कुछ निकला है शायद तुम्हारे पास solution, which is innovative solution. Can it be innovative? Can it be very unique solution? So that is what I would urge all of you. Every time I spend time, I feel कि एक सोल तो जाग जाएगा एमोक इंडिया के इतने चिल्लाने चीखने से, शायद एक सोल तो जागेगा. So I am always very hopeful, very optimistic. I feel I enjoy doing this because why? There is another श्लोक, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, गीता में श्लोक है कि ignorant people do the job for profit. Okay, this श्लोक is 25th of chapter 3. संस्कृत में पढ़ सकता हूँ मैं. सक्ता कर्मण, मुझे लिखना पड़ा तो याद नहीं था एक्चुअली. सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस सक्तता लोक संग्रहम. एंड वाइज मैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड. दिस इज गीता का वेरी प्रोफाउंड, वेरी डीप श्लोक है ये, कि जो इग्नोरेंट लोग हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और जो वाइज मैन हैं वो काम करते हैं वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड के लिए. अब आप सोचो, ये इसके बारे में कोई लिखना और सोचना, इसमें आई एम लिविंग इट देयर. इट्स अ थॉट, वेरी वेरी डीप थॉट. मे बी आपको लगेगा अरे ये तो यार सीनियर सिटीजन वाला थॉट है, हमें क्या करना है. आई तो हैव एंजॉय माय लाइफ ऑन इंस्टाग्राम. रील देखो, रील में क्या आया नया क्यों. एनीवे, सो एक गाय हैड कम, यंग गाय फ्रॉम हैदराबाद, हमारे एक कॉन्फ्रेंस में आया था. उससे पूछा सवाल लोगों ने, सर स्टार्टअप में क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट इज माय स्टार्टअप सीक्रेट, कैसे होना चाहिए. तो उसने बोला पहला काम तो आपको अपना इंस्टाग्राम बंद करना चाहिए. And he's a young guy, 21 year old. इसका नाम है हैदराबाद का. We had invited him for a conference. I got his name from the Times of India because he's won award from Times of India, and he has made some $1 million. And very simple idea he has. उसने क्या किया, उसने फंडिंग का कुछ आइडिया, पहले वो पॉडकास्ट बनाया, लोगों के पास गया, वो इंटरनेशनल लोगों के पास गया, उसको डर नहीं लगा. 18 इंजीनियरिंग करने के बाद 19 साल में उसने सीधे अप्रोच किया बिल गेट्स को. उसको लिखता रहा वो, अरे जवाब दो ना, तो हमें लिखने की प्रॉब्लम क्या है. और करते करते उसका पॉडकास्ट तो सफल हो गया कि आज वो फंडिंग करा रहा है स्टार्टअप्स की और बड़े बड़े बिग फंडर्स से, इन्वेस्टर्स से, एंड ही इज मेकिंग ह्यूज मनी. So anyway, I just told you that we have to look at our time. Where is my time being invested? Is it productive, efficient use of my time, or I'm just whiling away? Okay, because last shloka I will tell you, which I think I had not mentioned last time. I had given the gist of that before I tell you. It is called in Gita only, same chapter 3. It is 22nd shloka है ये. नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि. संस्कृत के श्लोक मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता है. किसी को आती है संस्कृत? यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी बात है. I think lot of us learn French, but French people are learning Sanskrit and we are learning. So try and do that. I'm sure. And why? What is this shloka means? इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भाई देखो, मेरे पास ना तो कोई ड्यूटी है, मेरे कोई कर्तव्य नहीं मेरे पास करने के लिए, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार कोई हो. There is no duty for me to do in all these 3 words. त्रिषु लोकेश, तीनों लोकों में मेरे पास कोई काम करने को नहीं है. Nor do I have anything to gain or attain. ना मुझे कुछ मिलने वाला है कि पैसा मिलना हो, ठीक है, कि कुछ मुझे मिलना हो. Yet I am engaged in prescribed. तब भी मैं कर्म में लगा हुआ हूँ. आप सोचो, मैं कर्म कर रहा हूँ, सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ कर्म को. That is a thought you all should try and. दो श्लोका बता दिया आप लोगों को मैंने, चैप्टर बता दिया. जिनके पास घर में गीता होगी देख भी सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं, कहीं लगा सकते हैं बोर्ड में. At least something you should just carry home. I'm just saying that something, whatever abracadabra I have told you. सेंटर कोई पिक्चर नहीं बनाई थी, यहाँ देखिए ये बताऊंगा, ऐसे हेडिंग होगी,
ये प्रस्तावना, भूमिका और ये उपसंहार होगा। ऐसा कोई निबंध नहीं था मेरे पास, लेकिन जो मैंने बताया है मुझे लगता है कि शायद दो चार चीजें किसी के दिल को छू जाए, वो लिख ले और कर ले, एंड दैट इज द सक्सेस ऑफ माय दिस coming here. Thank you so much to all of you for your time. Wonderful. Thank you, sir, for your illustrious words. The engaging manner in which you convey your key insights leave a lasting impression that is a big inspiration for all of us. I request Professor Dr. Yogendra Kumar Mishra, sir, to take the stage as he wants to share his valuable thoughts with us. Hello. Yeah. So basically, I was not having any prepared speech like you. But a talk is never complete, or a session is never complete if there are no questions. So I would let you that you should ask some questions. A question, so we believe that a question is always a question. An answer can be stupid, but a question is never stupid. So I would like any one of you to stand up and ask the question. और अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा. So now anybody has any questions? It could be anything. Doesn't seem the case. Okay, then you stand up. Tell your name. Who? Yeah, you. Yeah. What is your good name, please? Yeah. And what do you think? Your future? What are your career goals? What do you want to become? Have you started thinking that what you want to do in your life after your studies? अभी सोचना नहीं शुरू किया. कोई बात, बैठ जाइए आप. कि कोई और है जो पूछना चाहता है? Yes, you want to ask? Okay. आप लोगों ने चैट जीपीटी कितने लोगों ने सुना है? स्ट्रेंथ काफी ठीक ठाक लग रही है. Nice, very nice, but I would like to advise you something. A real story. In Europe, we are transforming the examination pattern from written to oral. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि there are so many books available. पूरा का पूरा नॉलेज इंटरनेट पर पड़ा हुआ है, बट वो किसी काम का नहीं है. सिर्फ आपके काम का वही है जो आपके ब्रेन में स्टोर है, जो आप डिलीवर करते हैं. तो अगर आप एज ए यंग स्टूडेंट इफ यू वांट टू डू समथिंग, आई वुड सजेस्ट कि आप चैट जीपीटी का थोड़ा सा कम इस्तेमाल करिएगा, और वो करिएगा जिससे आपको सीख सके, जो आपके ब्रेन में जा रहा है वो अच्छा है. अदरवाइज चैट जीपीटी से बहुत ज्यादा हेल्प नहीं होने वाली. आजकल जब हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छा लेटर लिख करके आया हुआ है, कवर लेटर भी मेल्स में लोगों ने लिखा है, तो हमें पता चल जाता है कि ये चैट जीपीटी से लिख के भेजा गया है, कैंडिडेट ने नहीं लिखा है. एंड द सेम वाज हैपनिंग. चाइना से हम लोगों के पास ईमेल आते थे, एप्लीकेशंस आती थी, अच्छी होती थी, बाद में पता चला कैंडिडेट आया, उसको एक भी सिंगल वर्ड इंग्लिश बोलना नहीं आता था. तो दैट भी चेंज कि हम रियल इंटरव्यू लेते हैं और उसको रियल टास्क देते हैं रियल टाइम में लिखने के लिए. तो अगर आप लोग चैट जीपीटी के जो है फैन होना शुरू हो गए हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम लीजिए. जब आप स्टडीज कंप्लीट कर लें उसके बाद चैट जीपीटी को फुल फेज में यूज कर सकते हैं. आई डोंट नो, आर देयर एनी फर्दर क्वेश्चंस? इट कुड बी एनीथिंग. Seems not the case, then I would say thank you and don't want to talk more. Thank you, sir. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Every celebration is an experience. The external fades away
and the internal linger echoes in the most depth of our heart. We are reminded that events like this one are milestones on the journey of life and reminders of God's fidelity also. Now it's time to express our gratitude. We have mementos, a token of appreciation for our honorable chief guest who have taken out their valuable time to grace this conference. Now, I would request our respected Director Ma'am to present a memento to Honorable Professor Dr. Yogen Kumar Mishra sir with a token of thankfulness. Give a huge round of applause, audience. Keep your hands tapping, audience. Now I would request respected Director Ma'am to present a memento to Honorable Mr. Praveen Kumar Devedi sir with a token of recognition. Thank you everyone for your strongly presence. By this, we come to the end of our technical session 1. Now it's time for a tea break. I would like to request all the dignitaries, faculty and staff members to move towards the foyer for a short break. After the break, we will proceed to our technical session 2, where different researchers and scholars will be presenting their research papers. Thank you everyone.